Hello everyone. Hello everyone. समस्त स्वागत करुच्ची आपनकर प्रिय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया को यही लाइव सेशन रे हम डिस्कशन करबा बॉटनी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आउ किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू जहा आपनकर एलटीआर मेंस 2025 पे बहुत उपयोगी हबो। मोर वॉइस ऑडिबल हो कि काइंडली टिके कहि दियंतु। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके चलो हम स्टार्ट करिबा। ओके चलो हम स्टार्ट करिबा। ओके तारे समस्त को जय जगन्नाथ। स्वागत करुच्ची सीईआई क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया यूट्यूब चैनल को। यही लाइव सेशन रे हम डिस्कशन करबा बॉटनी रो प्रीवियस क्वेश्चन। हमर बॉटनी रो दीटा ऑलरेडी सेशन सरी जाइछ। हमर पार्ट 1 पार्ट 2 एटा होची पार्ट 3 आउ एही प्रीवियस क्वेश्चन हमर सरीला पूरा ता सहित कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू मध्ये अछि मु कलेक्ट करछि ताहा भी हम डिस्कशन करबा। ओके पार्ट 3 डिटेल्ड एनालिसिस with proper concepts on CEI। वीडियो आरंभ करिया पूर्व CEI चैनल तरफ LTR मेन रो कॉन्सेप्ट रिवीजन क्लास ई बुक मोक बहुत एफोर्डेबल प्राइस रे आस जाइछि। आपण माने जे जॉइन करियो चाहउछंती एही WhatsApp नंबर आपण कांटेक्ट करंतु। ता सहित OAVS रो मध्ये रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी बाहर को जाउछि। OAVS पाई मध्ये आवश्यक होतबा कॉन्सेप्ट क्लास रिवीजन क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स और ई बुक एही प्रोग्राम पे आपण जे जॉइन करियो चाहउछंती ताले एही नंबर आपण कांटेक्ट करि परिबे। ओके चलंतु आमे स्टार्ट करबा हमरो एही पार्ट 3 बॉटनी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ओके let's begin our first question. According to binomial system of nomenclature of plants, each plant name consists of two parts. Which of the following is one of those? हमरो जो प्लांट रो जो साइंटिफिक नेम जहा को हमें बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहूचे से नेम रे दीटा पार्ट अछि। जेमते हमें धरनेबा मैंगो मैंगो रो जदि मु कहबी आपन को आर साइंटिफिक ना बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कोन हो तो कोन हो आंसर मांजीफेरा इंडिका। जो मांजीफेरा इंडिका होची मैंगो रो साइंटिफिक नेम इन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो एठी दीटा वर्ड अछि। फर्स्ट वर्ड हमर कोन सूचौची जीनस को जीनस रे सेही प्लांट अछि। सेकंड वर्ड हमर सूचौची स्पेसीज को। ओके कमेंट सेक्शन रे 1 रो ए कहिसंती आंसर ठीक। तो से कहिछि एई चारिटा ऑप्शन रु सेही नेम रे कोन कोन अछि रहइबो। तो जीनस स्पेसीज रहइबो तो ऑर्डर रहइबोनी क्लास रहइबोनी फैमिली रहइबो। तो आंसर कोन हबो जीनस। ओके 1 रो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। Which one is not a characteristic feature of gymnosperm?
Archegonia lack neck canal cells. Pollen grains fall on stigma, germinate and produce pollen tubes. Xylem vessels are absent. Phloem lacks companion cells. अच्छा जिम्नोस्पर्म को ऑप्शन रे कैरेक्टरिस्टिक फीचर नुह तो जिम्नोस्पर्म्स माने एमानकर सीड अच्छी बट नॉन फ्लावरिंग प्लांट एमानकर फ्लावर नहीं यदि फ्लावर नहीं नॉन फ्लावरिंग यस नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कमेंट सेक्शन में देखुची जितेंद्र कहले 2 रो बी यस तो आंसर आर बी हम नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक कहि तेणु जेहेतु जिम्नोस्पर्म माने नॉन फ्लावरिंग प्लांट सेतिबे एमानकर स्टिग्मा आसीबो कोडु स्टिग्मा होची प्लांट रो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमर गाइनोसियम रो गोटे पार्ट स्टाइल स्टिग्मा ओवरी पोलन ग्रेन आसीबो को कोडु तेणु ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट आउ जो ऑप्शन ए सी आउ डी अछि दे आर करेक्ट फॉर जिम्नोस्पर्म ओके लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहला देखंतु which is not a photosynthetic pigment कोटा photosynthetic pigment नुह photosynthesis रे हेल्प कर नै कैरोटीन फाइकोबिलिन ज़ैंथोफिल लैमिनारिन कौन हबार आंसर कैरोटीन फाइकोबिलिन ज़ैंथोफिल लैमिनारिन मन रखंतु कैरोटीन फाइकोबिलिन ज़ैंथोफिल ए समस्त होचंती फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लामिनारिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नुह लामिनारिन होची गोटे रिजर्व फूड मटेरियल आमे नेक्स्ट क्वेश्चन रे डिस्कशन करिबा ये लामिनारिन विषय आउ टिके अधिक ये जो रिजर्व फूड मटेरियल ठीक अछि तेणु लामिनारिन फोटोसिंथेटिक मटेरियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हबो नाही तो ऑप्शन डी यस कमेंट सेक्शन रे 3 रो डी कहउछंदी यस ठीक आंसर 3 रो डी लामिनारिन ठीक अछि कैरोटीन फाइकोबिलिन ज़ैंथोफिल दे आर ऑल आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ओके नेक्स्ट नंबर 4 ट्रैक्योफाइटा को प्लांट मानको हम ट्रैक्योफाइटा कहबा ट्रैक्योफाइटा कोन जो प्लांट मानकर भास्कुलर टिश्यू अछि सेही प्लांट मानको हम ट्रैक्योफाइटा कहबा तो टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ए तीन जण जगर भास्कुलर टिश्यू अछि सेतपय दिस 3 plants टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर collectively known as ट्रैक्योफाइटा ओके 4 डी यस करेक्ट आंसर मु कमेंट सेक्शन में देखु छी आ करेक्ट आंसर कहउछंदी 4 डी बहुत बढ़िया 4 डी ठीक अछि ओके चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आडक जिबा इट लिखली प्लांट्स विथ भास्कुलर टिश्यूज आर नोन एज ट्रैक्योफाइटा ओके चलंतु नंबर 5 को जिबा Which of the following algae are used by space travelers as food supplement? ओ algae को space traveler माने यूज करचंती as food supplement. Gracilaria gelidium, Volvox ulothrix, Spirogyra calps, Spirulina chlorella. Okay, number 5 question. Comment section रे आंसर दियंतु मो वेट करछि को algae को space traveler astronaut माने निजर फूड सप्लीमेंट रूपे यूज करचंती जो माने बेसिकली को फूड सप्लाई करिवे प्रोटीन अत्यधिक प्रोटीन सप्लाई करि परचंती कोन हबार आंसर यस 5 रो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी स्पिरुलिना एंड क्लोरेला ए algae सिंगल सेल्ड algae को यूज करा जाउची एज फूड सप्लीमेंट मन रखंतु इट इज ए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन स्पिरुलिना एंड क्लोरेला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नंबर 6 फ्यूजन बिटवीन ए लार्जर नॉन मोटाइल फीमेल gamete and smaller motile male gamete is called female gamete ला suppose ये होची female gamete ये larger but non motile ये होची female gamete ठीक अछि larger smaller motile male gamete
मोटाइल माने तार कोन थिबो फ्लैजेला थिबो ठीक अछि मेल गैमेट ओके तो एठी फ्यूजन हेले एमानक भितर जे फ्यूजन में फर्टिलाइजेशन हेले एई टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन को कोन कहै छिबो ओके ए हमें प्रीवियस लेक्चर रे हमें डिस्कशन भी करि सार छे मोर प्रीवियस दुटा वीडियो बॉटनी और जूलॉजी वीडियो काइंडली देखि दियंतु बहुत सारा पीवाईक्यू हमें डिस्कशन करछे यह भी गोटे रिपीट होइछे क्वेश्चन टा तर आंसर हबो उगैमी वेरी गुड कमेंट सेक्शन रे कहउछंती यस उगैमी 6 नंबर आंसर हबो उगैमी ठीक अछि उगैमी इज द करेक्ट आंसर ओके जोटी की लार्जर नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट भितर दीड जाको गैमेट जदी सिमिलर हे जिवो ताहल ताकू कोहा जिवो आइसोगेमी दीड जा गैमेट जदी डिसिमिलर हबो ठीक अछि ताहल ताकू कोहा जिवो आ स्मॉलर जदी कहिला लार्जर नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट स्मॉलर मोटाइल फीमेल गैमेट ताहल ताकू कोहा जिवो उगैमी ठीक अछि यस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखंतु which is not a part of anatomy of dicot stem number 7 which is not a part of anatomy of dicot stem vascular tissue dicot stem ro anatomy ro कोटा part no vascular tissue cortex pericycle epiblema कोन होबार आंसर vascular tissue तो dicot stem रहिबो cortex रहिबो pericycle is involved in secondary growth pericycle भी हबोनी तो epiblema विषय हम जानिबा epiblema विषय मोर कांसेप्ट लिखि छी an epiblema is a layer of cell found specifically in the root tip of a monocot plant, not in the dicot stem. ठीक है तो एपिब्लेमा मोनोकोट प्लांट मानकर देखा जाउची मोनोकोट प्लांट रा उतरे को पार्ट रे मोनोकोट प्लांट रा को पार्ट रे रूट टिप रे ठीक अछि मोनोकोट प्लांट ओके तो आंसर हम एपिब्लेमा 7 रो डी कमेंट सेक्शन रे कोन तोर आंसर जणा अछि जहा जहा आंसर बा जहा जहा आपनकर सजेशन की क्वेरी अछि कमेंट सेक्शन रे जणांतु 7 रो आंसर डी ओके चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ओके चलंतु 8 नंबर क्वेश्चन बुझिबा एटलीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय नंबर 8 कोन हो नंबर 8 हम पृथ्वी रो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन माने हाफ ऑफ द फोटोसिंथेसिस को प्लांट करूची एंजियोस्पर्म ब्रायोफाइट आंसर कोन हबो कमेंट सेक्शन रे कोंदु जल्दी जल्दी लाइव सेशन रे जोड़ी जानतु ओके हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय algae मन रखंतु algae इज द करेक्ट आंसर ओके मैं कमेंट सेक्शन में देखुची 8 रो ए हबो नाही 8 रो डी हबो
algae हमको लागुची कि एंजियोस्पर्म बहुत सारा अच्छंती और से करेंगे फोटोसिंथेसिस बट द रियल आंसर इज algae बहुत सारा algae हमरो ओशन मेराइन माने समुद्र भी अच्छंती ठीक अछि बिल्कुल जो माने कौन करचंती कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रो अधा कैरिड आउट करचंती तो आंसर इज algae ठीक अछि नेक्स्ट जिबा नंबर 9 क्वेश्चन को फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन फ्लोरिडियन स्टार्च अच्छा एटा बहुत इंपोर्टेंट आपको मन रखिया फ्लोरिडियन स्टार्च होची गोटे रिजर्व फूड मटेरियल रिजर्व फूड ठीक अच्छे क्लोरोफाइसी होची हमर ग्रीन एल्जी रोडोफाइसी मन रखंतु रोडोफाइसी होची रेड एल्जी ठीक अच्छे फियोफाइसी ब्राउन एल्जी सियानोफाइसी मीन सियानो बैक्टीरिया जस्ट लीव इट बर्तमान यही टेबुल बहुत इंपोर्टेंट आपण बहुत इंपोर्टेंट टेबुल ठीक अच्छे क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्जी रो रिजर्व फूड मटेरियल होची स्टार्च स्टार्च होची रिजर्व फूड मटेरियल फियोफाइसी रो लामिनारिन एंड मानिटोल ठीक अच्छे मैं आपको टिके जूम कर दूचे ओके ओके ब्राउन एल्जी हमरो मत लिखि दोची क्लोरोफाइसी होची ग्रीन एल्जी रोडोफाइसी रेड एल्जी फियोफाइसी ब्राउन एल्जी फियोफाइसी रो रिजर्व फूड मटेरियल होची लामिनारिन रोडोफाइसी रो रिजर्व फूड मटेरियल होची फ्लोरिडियन स्टार्च तो बर्तमान क्वेश्चन कोन पचाछि फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन तर कोन हबो रोडोफाइसी नौर बी कमेंट सेक्शन रे कहछथि नौर बी बहुत बढ़िया नौर बी करेक्ट आंसर ठीक अच्छे यही स्क्रीनशॉट को टिके ये जो टेबल को स्क्रीनशॉट नहीं जानतु ठीक अच्छे ताको नोट डाउन कर दियंतु ये बहुत इंपोर्टेंट आपण मन हमर लामिनारिन भी आस्थिला पूर्व गोटे क्वेश्चन रे ये भी रिजर्व फूड मटेरियल कार फियोफाइसी रो ठीक अच्छे चलंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Number 10, which provides peat that have long been used as fuel? Mercansia, Funaria, Sphagnum, Polytrichum. कौन आंसर होबार ये सब जाक ब्रायोफाइट्स समस्ते होचंती ब्रायोफाइट कैटेगरी ऑल आर ब्रायोफाइट्स ठीक अच्छे ए भितर पीट पीट माने गोटे कोयला ऑर्गेनिक पीट किए सप्लाई करछि जहाँ हम फ्यूएल रूप यूज करछे हला एटा प्लांट इकोनॉमी चैप्टर को रिलेट करछि प्लांट इकोनॉमी बा ब्रायोफाइट को रिलेट करछि तार आंसर हो स्पैग्नम स्पैग्नम होछि एमिति गोटे ब्रायोफाइट जे कोन करछि पीट प्रोवाइड करछि ठीक अछि लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन Number 11 कौन हो देखो Bryophytes growth in moist and sandy environment because they cannot grow on land, their gametes fuse in water, they lack vascular tissue, they lack roots and stomata. Okay. 10 रो स्पैग्नम हो ठीक अच्छे कमेंट सेक्शन रे 10 रो ए क्वेश्चन नाही 10 रो आंसर स्पैग्नम दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट 11 नंबर आंसर कोंदु ब्रायोफाइट माने काहे की मॉइस्ट और सेटी एनवायरनमेंट रे बढ़ंती मॉइस्ट माने कोन वाटर तम काहे की दरकार से माने लैंड माने स्थल भाग रही परिबे किंतु वाटर ताको निहाती दरकार काहे की they cannot grow on land, their gametes fuse in water, they lack vascular tissue, they lack roots and stomata. 11 आंसर yes कमेंट सेक्शन रे ठीक आंसर कहले 11 आंसर बी
ब्रायोफाइट माने लैंड माने स्थल भाग रे रुहंती टेरेस्ट्रियल दे कैन ग्रो ऑन लैंड बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने गैमेट को फ्यूज करिया पाई मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करिया पाई से माने वाटर नियाती ताको दरकार वाटर इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इट्स सेते पई से माने मॉइस्ट हाउस सेटी एनवायरनमेंट रे रुहंती इट गोटे इंपोर्टेंट फैक्ट लिखा इज देखंतु Bryophytes are known as amphibians of plant kingdom. Amphibians माने कोन जो माने both land और water रहि परिबे जो माने both land और water रहि परिबे सेमानु का कोन कहबा amphibians बोली कहबा एनिमल किंगडम रे तो प्लांट किंगडम रे कहा को एम्फिबियंस कुआ होची तार आंसर हबो ब्रायोफाइट्स ओके चलंतु 11 नंबर आंसर बी हबो हाँ कमेंट सेक्शन जल्दी जोड़ी जानतु हमरो लाइव सेशन सहित समस्ते नंबर 12 जीवा नंबर 12 ए ठीक अच्छे नंबर 12 कौन बात है कौन हबो which is not a type of meristem based on plane of division plane of division को जदि हमें कंसीडर करिबा कोटा मेरिस्टम रो टाइप नुह जदि हमें प्लेन ऑफ डिवीजन को कंसीडर करिबा कौन हमार आंसर मास मेरिस्टम सर्कुलर मेरिस्टम प्लेट मेरिस्टम रिब मेरिस्टम और आंसर कौन तो 12 नंबर आंसर देखो मास मेरिस्टम प्लेट मेरिस्टम रिब मेरिस्टम ए सबू आमर मेरिस्टम जाको जाको हमें प्लेन ऑफ डिवीजन रे डिवाइड करि परिबे सेमिति किछि सिग्निफिकेंट नाही मेरिस्टम कोडा सर्कुलर मेरिस्टम सेमिति किछि सिग्निफिकेंट नाही प्लेन ऑफ डिवीजन को कंसीडर करले तो तार आंसर हबो सर्कुलर मेरिस्टम ओके तो 12 रो आंसर हबो 12 रो आंसर सी हबो ने 12 रो आंसर बी हो मास मेरिस्टम प्लेट मेरिस्टम रिब मेरिस्टम आर द मेरिस्टम जाके हम प्लेन ऑफ डिवीजन को हमें कंसीडर करके कहबे ठीक अछि ओके लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके चलन तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नंबर 13 कौन दो कौन हबो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन मोर प्रीवियस लाइव सेशन बॉटनी रे इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम विषय रे कहि सारछि इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कोन दीटा भास्कुलर बंडल एटा गोटे भास्कुलर बंडल आ गोटे भास्कुलर बंडल दीटा एडजेसेंट भास्कुलर बंडल भितरे
दुईटा एडजेसेंट भास्कुलर बंडल भितर जदि से कैम्बियम रहिला ताकू कुआ हबो इंटरफासिकुलर कैम्बियम। ठीक अच्छे इंट्रा कौन हम इंट्राटा अच्छी जदि से भास्कुलर बंडल भितर जदि कैम्बियम अच्छे से हूँ इंट्रा दीटा जदि भास्कुलर बंडल भितर जदि कैम्बियम अच्छी हूँ इंटरफासिकुलर। तर आंसर कौन हम आंसर हम डी बिटवीन टू भास्कुलर बंडल। ठीक अच्छे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखु कैम्बियम इंटरफासिकुलर केतले कुआ हबो जेतले दुईटी भास्कुलर बंडल भितर थिबो दीटा एडजेसेंट भास्कुलर बंडल भितर थिबा कैम्बियम को इंटरफासिकुलर कुआ जाय। तो आंसर हबो टू भास्कुलर बंडल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तेरह डी हम आंसर। ठीक अच्छे मन रख 13 डी। ओके मन रख जदि एटा इंट्रा कहला इंट्रा इंट्रा कहले कौन हम इनसाइड द भास्कुलर बंडल भितर। ठीक अच्छे लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नंबर 14 चलते देखा नंबर 14 इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड भास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन सेल्स ऑफ। सेकेंडरी ग्रोथ बेले लेटरल रूट कोड बाहर भास्कुलर कैम्बियम कोड तैयारी हुए को सेल रे पेरिसाइकल एपिब्लेमा कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस। सेकेंडरी कॉर्टेक्स वर्ड आसुची आपण माने पेरिसाइकल कथा मन पकेबे। पेरिसाइकल जे कि सेकेंडरी ग्रोथ रे बहुत तरह कंट्रीब्यूशन अछि। ठीक अछि तो द आंसर इज पेरिसाइकल। एठी मु आपण माने गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट लिखि दिछि देखंतु आपण टे पढंतु पेरिसाइकल विषय रे। देखंतु पेरिसाइकल कोन लिखि छि पेरिसाइकल is a layer of cells found in a root and stem of plants situated just inside the endodermis. It is a key part of the stele the central axis, the central vascular tissue of the root or stem. Pericycle plays a crucial role in plant development, including the formation of lateral roots can contribute towards the secondary growth. Secondary growth, lateral roots, a सब जदि आसला the answer is pericycle. So 14 रो A is the correct answer. Yes, answer A is correct. 14A. Next चलन जिबा 15 नंबर क्वेश्चन को जिबा 15 नंबर क्वेश्चन कोन कोन हबो 15 कोन हबो फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक। जिम्नोस्पर्म रो फ्लोएम रे कोन न थाए albuminous cell, seed tubes only, companion cells only, both seed tubes and companion cells. कौन अब आंसर जिम्नोस्पर्म रे both seed tubes और companion cell न थाए फ्लोएम रे। जिम्नोस्पर्म रो फ्लोएम रे both seed tubes और companion cell नहीं। मन रखो तो आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इट इज फैक्चुअल क्वेश्चन। ओके जिम्नोस्पर्म रो फ्लोएम रे यस 15 रो डी मौसुमी कहले 15 रो डी कमेंट सेक्शन म देखु छी करेक्ट आंसर 15 डी। बोथ सीड ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन फ्लोएम जिम्नोस्पर्म। ठीक अछि ओके लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोएम इज devoid of both seed tubes and companion cells. नंबर 16 को जीवा। नंबर 16 प्रीवियस सेशन रे गोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करथली टाइलोज विषय रे अछि
द बेलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टाइलोजेस टाइलोज विषय में ऑलरेडी डिस्कशन करछि मोर प्रीवियस वीडियो जे देखि दियौ आपण माने बहुत उपयोगी होबो PYQ जागो टाइलोज कोन आर एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा इनटू वेसल आर लिंक्ड टू द ascent of sap through xylem vessel originate in the lumen of vessels characterize the sap wood सो टाइलोज विषय में कहली कि जाइलम पैरेन्काइमा सेल ए जाइलम पैरेन्काइमा सेल रो एक्सटेंशन जे कि जाइलम रो वेसल भीतर को चली आस्ता है से बेलून शेप्ड स्ट्रक्चर जो को टाइलोज जो माने ब्लॉक कर दियंतु जाइलम वेसल को ठीक अछि द आंसर इज टाइलोज प्रीवियस वीडियो बॉटनी रे मु या ऊपर बहुत डिस्कशन करथली टाइलोज विषय रे ठीक अछि एबे भी मन रखि दियंतु टाइलोज कोन आर एक्सटेंशंस ऑफ कार जाइलम पैरेन्काइमा सेल इनटू जाइलम वेसल ठीक अछि 16 रो A is the correct answer. Next question जी बात number 17. Number 17 को जी बात okay. Age of a tree can be estimated by tree ro age 16 ro A correct answer ठीक अछि age of a tree can be estimated by diameter of its heartwood its height and girth biomass number of annual rings कोन हबो आंसर कमेंट सेक्शन रे कोन दो गोटे ट्री रो एज को जानिया पई तार नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स को कैलकुलेशन करा जाए एनुअल रिंग नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स आर द इंडिकेटर ऑफ द एज ऑफ ए ट्री सो आंसर डी इज करेक्ट नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आगुडे मन रखिबे नंबर 18 को जिबा नंबर 18 द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1 have you repeated question मोर previous video रो 17 रो D correct बर्तमान 18 नंबर आंसर कोन दो रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1 रो रिएक्शन सेंटर कोन फोटोसिस्टम 2 रो मध्य रिएक्शन सेंटर कोन कोन कमेंट सेक्शन रे मते जणांतु what are the reaction centers of PS1 and PS2 already मु डिस्कशन करि सारछि या ऊपर मोर प्रीवियस लेक्चर वीडियो रे अच्छा फोटोसिस्टम यस 18 रो आंसर ए बहुत बढ़िया P700 नैनोमीटर वेवलेंथ होची PS1 रो रिएक्शन सेंटर PS2 रो कोन हबो PS2 रो हबो 680 तो एठी 18 आंसर ए होबो काहे कि PS1 पचारछि तो 1 रो रिएक्शन सेंटर मन रखंतु 700 PS2 रो कोन हबो 680 एदिरा बहुत इंपोर्टेंट मन रख P700 होची PS1 ओके 18 रो ए करेक्ट आंसर चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ओके नंबर 19 चलन जुआ ड्यूरिंग C3 साइकिल कार्बोक्सिलेज एंजाइम कैटालाइजेस जॉइनिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ हमर जो C3 साइकिल फोटोसिंथेसिस रे होची सेठी कार्बोक्सिलेज माने जो रुबिस्को टी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के रुबिस्को एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज ए एंजाइम कैटालाइज करूची का जॉइनिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य काहा को जॉइन करूची माने एटी एक्सेप्टर के प्रीवियस वीडियो रे भी आपको डिस्कशन करिछि मु भलो से टी एक्सेप्टर के हो कार्बन डाइऑक्साइड सहित मिसिबो के RUBP मन रखम राइबोलोज बाइफॉस्फेट RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट सहित कार्बन डाइऑक्साइड को मिसेइबो किए को एंजाइम रुबिस्को ए रुबिस्को एंजाइम
कार्बन डाइऑक्साइड सहित RUBP को मिसेब ठीक अछि सो आंसर इज बी राइबोलोज बाइफॉस्फेट ओके राइबोलोज हबने राइबोज जाइलोज हबने राइबोलोज बाइफॉस्फेट इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आडू जा 19 रो बी होची करेक्ट आंसर हैला 20 नंबर आंसर कोंतु द फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन सरगम इज आपण माने देखंतु फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन माने हमको कोन लागिवो इधर C3 साइकिल हेतिबो और C4 हेतिबो C3 हेतिबो तो आंसर हबो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड C4 हेतिबो तो आंसर हबो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ठीक अछि बर्तमान आम जाना पड़े सरगम जो अच्छी गछटा ये कौ टाइप प्लांट ये C3 प्लांट ना C4 प्लांट ये गोटे मिलेट और सरगम मन रखते गोटे फैक्ट ये हूँ C4 प्लांट सरगम हूँ C4 प्लांट मन रख जो सरगम गोटे C4 प्लांट तो C4 साइकिल फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट किए ऑक्सैलोएसिटिक एसिड तो आंसर हम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ठीक अच्छे 20 रो A okay the first stable product of CO2 fixation sorghum होचले millet plant millet C4 plant गोटे is oxaloacetic acid number 20 let's go towards number 21 ओके टोटल 40टा क्वेश्चन आज डिस्कशन करबा हला 20टा क्वेश्चन हमर एठी सरला नेक्स्ट आमे जिबा 21 नंबर क्वेश्चन को 21 नंबर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन रे कोन जल्दी जल्दी 21 कोन होबो इन हैच एंड स्लैक पाथवे द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर फर्स्ट टाइम जाने हैच एंड स्लैक पाथवे कौन हैच एंड स्लैक पाथवे होची C4 साइकिल ठीक अच्छे तो C4 साइकिल माने प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर की जेमिति हमरो C3 साइकिल रे RUBP एक्सेप्ट करूथला कार्बन डाइऑक्साइड को एठी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर C4 साइकिल रे की हो रुबिस्को ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट तो C4 रो एक्सेप्टर की C4 रो एक्सेप्टर होची D ऑप्शन D कमेंट सेक्शन रे 21 रो A कहउछंत नाही 21 रो D हो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ठीक अछि यार कांसेप्ट मु एठी क्लियर कर दोची आपन मानन पई जोडा कि मु प्रीवियस वीडियो रे भी कांसेप्ट को हमें बहुत एनालिसिस करि सरछे आउथरा ई कांसेप्ट को हमें क्लियर कर दवा चलंतु देखो चलते आम भलसे C3 और C4 को टिके ब्रीफली कांसेप्ट को एनालिसिस करवा ओके C3 होची मोस्ट कॉमन फोटोसिंथेटिक पाथवे फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट मन रखिया C3 रो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बा 3 फॉस्फोग्लिसरेट तार तीनटा कार्बन अछि तीनटा कार्बन पाई आकु C3 को आगला ठीक अच्छे फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट होची 3 फॉस्फोग्लिसरेट को नोट डाउन कर दियंतु एंजाइम के रुबिस्को अकर्स इन मेसोफिल सेल कार्बन डाइऑक्साइड RUBP से मिसची जो एक्सेप्टर ये होची RUBP होची एक्सेप्टर आ से मिसिकी स्टेबल प्रोडक्ट कोन तरी गला 3 PGA किंतु आर लिमिटेशन होची एठी फोटो रेस्पिरेशन हे जाउची रुबिस्को ऑक्सीजन से मिसिकी फोटो रेस्पिरेशन हे जाउची एति होची C3 साइकिल रो इंपोर्टेंस चलो C4 साइकिल रो टिके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करबा C4 टिके डिस्कशन करिया हैच स्लैक पाथवे को होची मेज सुगर केन होची C4 प्लांट फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट के ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बा ऑक्सैलोएसिटेट जरा चारिडा कार्बन अछि एंजाइम कोन हबो PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम इन मेसोफिल सेल एक्सेप्टर के हबो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जेमिति C3 रे RUBP एक्सेप्टर थिला एटी एक्सेप्टर होची PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट C4 रे एटी दीटा सेल मिलिबा आपनको जा क्रांस एनाटॉमी को लिखुआ होची
मेजोफिल सेल रिंग भली थिबो ता भितर थिबो बंडल शीथ सेल जोटी कैल्विक साइकिल होची आउ एटी फोटो रेस्पिरेशन हो नाही C4 पाथवे रे ठीक अछि तो एई सब नोट को आपण नोट डाउन करतंतु बहुत इंपोर्टेंट एथरो क्वेश्चन आसीबो ओके लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कोन हबो कोंतु 22 which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis ro light reaction ro कोटा प्रोडक्ट हबो नाही अच्छा ATP NADH NADPH ऑक्सीजन और आंसर कोन हबो कोंतु लाइट रिएक्शन रो कोटा प्रोडक्ट हबो नाही ATP NADH NADPH ऑक्सीजन ATP तो लाइट रिएक्शन रे तयारी होछ ऑक्सीजन भी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रो फोटोलाइसिस हेकी ऑक्सीजन तयारी होछ एनर्जी कैरियर भाबरे NADPH मध्ये बाहरछ तेणु आर आंसर हो NADH लाइट रिएक्शन रो प्रोडक्ट नुह ठीक अछि लाइट रिएक्शन रो प्रोडक्ट नुह NADH 22 रो B is the correct answer D हबो नाही B हो NADH लाइट रिएक्शन रे ATP तयारी होची NADPH गोटे एनर्जी कैरियर भाबरे तयारी होची ऑक्सीजन तो रिलीज होची फोटोलाइसिस ऑफ वाटर सो 22 रो आंसर B यस कमेंट सेक्शन B कहले आंसर ठीक अछि ओके चलंतु एई कांसेप्ट को पढि दियंतु ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 23 The process which makes major difference between C3 and C4 plant. C3 और C4 plant रे major difference को process आनुची photo respiration, glycolysis, Calvin cycle. So C3 C4 भितरे major difference आनुथिबा process रो ना होची photo respiration. C3 cycle रे photo respiration हे जाउची जोडा कि C4 रे हो नाही तोड़ मन रखिबा photorespiration is the major difference between C3 and C4 23 answer is A photorespiration comment section रे कोन ठीक अछि C3 and C4 okay नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 23 सल्ला 24 को जिबा 23 रो A ठीक अछि नेक्स्ट जिबा 24 What is the first stable product after joining of atmospheric carbon dioxide with PEP in case of CAM plants? CAM plants रो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की तो मु एठी गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट कहया चाहूची CAM प्लांट मानकर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C4 प्लांट रो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सहित समान हम यही कॉन्सेप्ट को मन रखु फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट CAM प्लांट प्रीवियस वीडियो रे मु डिस्कशन करथली एमाने जेरोफाइट ड्राई डेजर्ट रहउछन एमाने ठीक अछि गोटे डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पाथवे रे माने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करछंती दिन बेला एमानकर स्टोमाटा क्लोज रहउछि एमानकर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C4 प्लांट रो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट समान हबो तो आंसर कोन हबो कोंदु Yes, citrate, malate, oxaloacetate, fumarate. The answer is
ऑक्सालोएसिटिक एसिड बा ऑक्सालोएसिटेट इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया कमेंट सेक्शन रे भी आंसर कहउछन समस्त बढ़िया लागुछ। 24 रो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर को जिबा। इट कांसेप्ट मु लिखि देछि इन बोथ CAM एंड C4 पाथवे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होछि ऑक्सालोएसिटिक एसिड। 25 को जिबा। 25 कोंदो which cell organelle is not involved in photorespiration। तो आम जाना फोटोरेस्पिरेशन रे को ऑर्गेनाल माने इन्वॉल्व नुह। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिजम, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोसोम। तो प्रीवियस लेक्चर मु करथली कि को माने इन्वॉल्व थिले परीक्षा रे आस्तिला बे पचारला कोन को सेल ऑर्गेनाल इन्वॉल्व नुह। तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिजम, माइटोकॉन्ड्रिया ए तीनडी जाक ऑर्गेनाल इन्वॉल्व ये तीन जाक ऑर्गेनाल इन्वॉल्व इन फोटोरेस्पिरेशन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिजम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन्वॉल्व कोडा हबो नहीं पचाछि नॉट इन्वॉल्व पचाछि तो आंसर हबो ग्लाइकोसोम। ग्लाइकोसोम करेक्ट आंसर हबो जे कि फोटोरेस्पिरेशन रे कोनोसी कंट्रीब्यूशन बा तार इन्वॉल्वमेंट नाही। 25 रो डी हबो आंसर डी। ठीक अछि ए तीन जण इन्वॉल्व से इन्वॉल्व कोडा नाही कहिछि तो ग्लाइकोसोम इज द करेक्ट आंसर। ओके let's move towards the next question। 25 रे डी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। ओके 26 कोंदो which one of the following growth regulators is an adenine derivative। ए सबु जाक फाइटो हार्मोन किछ ना किछ ओडे नाइट्रोजनस बेस रो डेरिवेटिव हेता दिबा किछ ना किछ केमिकल रो डेरिवेटिव हेता। आमे जानिबा ए सबु जाकर को केमिकल रे माने डिराइव हेचंती। 26 रो आंसर कोंतु ए चारिटा ग्रोथ रेगुलेटर देला ए भितरु को ग्रोथ रेगुलेटर एडेनाइन डेरिवेटिव एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। आंसर हबो एठी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन होची एडेनाइन डेरिवेटिव। मोर गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट आपन मन पे आनि दोची टिके नेक्स्ट स्लाइड को बोले आपन जानि परबे। देखंतु एठु आमे कांसेप्ट क्लियर हे जिबा। ई कांसेप्ट देखंतु आकु नोट डाउन कर दियंतु। साइटोकाइनिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एडेनाइन। ऑक्सिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इंडोल कंपाउंड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ऑक्सिन जैसे इंडोल कंपाउंड, साइटोकाइनिन जाको एडेनाइन। एब्सिसिक एसिड डिराइव्ड फ्रॉम कैरोटिनॉइड्स, एथिलीन्स डिराइव्ड फ्रॉम मेथियोनाइन। ठीक अछि तो आपण एई कांसेप्ट को नोट डाउन कर दियंतु बहुत आपण मन पे उपयोगी हो। साइटोकाइनिन तापर पछाछि एडेनाइन डेरिवेटिव की तो आंसर हो साइटोकाइनिन। ठीक अछि नेक्स्ट जिबा 27 नंबर क्वेश्चन। द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स in a field is। 27 वीड को वीड माने हमर जो अनवांटेड प्लांट माने जो माने ग्रोथ हे होछ त वीड को होछ। तो वीड को डिस्ट्रॉय करिया पई हमें कोन यूज करिया वीडिसाइड यूज करिया वीडिसाइड। ठीक अछि तो को प्लांट हार्मोन को हमें वीडिसाइड रूप यूज करि परिबा। आंसर अबाउट 24D यस 27 बी ऑप्शन इज करेक्ट। 24D हो जोड़े सिंथेटिक ऑक्सिन जाको हमें वीड मान को डिस्ट्रॉय करिया पे यूज करबा। ठीक अछि सिंथेटिक ऑक्सिन। ओके 24D ऑक्सिन रो सिंथेटिक वर्जन 240 24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। 28 नंबर चलंतु। 28 name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop increases the length of stem thus increasing the yield of sugarcane crop। 28 रो आंसर कोन हबो।
28 रो कोन आंसर हो को हार्मोन को आमे सुगर केन क्रॉप रे स्प्रे करबा जी की तार लेंथ ऑफ स्टेम को बढ़ौची हाइट को बढ़ौची यस कमेंट सेक्शन ए कहले यस आंसर ए इज करेक्ट 28 रो ए जिबरलिन जे कि प्लांट रो हाइट को इंक्रीज करिया पई यूज करा जाए नंबर 29 को जिबा growth hormone auxin was isolated by FW went from tips of seedling of coleoptile of को गच्छर coleoptile रू FW went scientist auxin hormone को isolate करथिले ता बडे fact based question rice maize wheat oat answer is oat ठीक अछि 29 रो डी हबो आंसर yes 29 रो wheat हबो नाही 29 रो oat is the correct answer oat हबो correct answer ओके ए मोर प्रीवियस वीडियो रे मध्ये मु ऑलरेडी ए एफडब्ल्यू वेंट विषय डिस्कशन करि सारछि ओके चलो हमें नंबर 30 को जिबा 29 रो डी नंबर 30 को जिबा चलो नंबर 30 which one is a synthetic auxin 2,4 dichlorophenoxy acetic acid जहाँ होचे 2,4-D indole 3 acetic acid indole 3 pyruvic acid indole 3 acetaldehyde so 2,4-D एबे हम डिस्कशन करले तो राइट आंसर इज 2,4-D that is option A is the correct answer okay next 31 को जिबा which one of the following growth regulators is known as stress hormone गच्छ पई जदी stress hormone आसला प्लांट पई stress condition drought कुछ मरुडी पड़ी गला water scarcity आसी गला से टाइम रे की stress hormone हबो त आंसर इज abscisic acid बा ए बी को हो abscisic acid होची stress hormone for plant रो stress hormone रो ना होची abscisic acid 31 रो बी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 31 रो बी करेक्ट आंसर ठीक अछि 31 रो बी abscisic acid stress hormone ओके नेक्स्ट जिबा 32 देखो समझते during seed germination its store food is mobilized by seed germination रे seed भितरे थिबा food जो stored food से mobilize केमिति हुई को हार्मोन seed भितरे थिबा food को mobilize कराए 32 रो आंसर कोन दो stored food mobilization किए कराए कौन आंसर हमारा 32 रो आंसर कौन stored food mobilized by important मन रखिबा जिबरलिन मन रखन तो एटा गोटे फैक्ट हिसाब रे यस जिबरलिन इज द हार्मोन जे कौन कराए stored food को मोबिलाइजेशन कराए सीड जर्मिनेशन टाइम रे stored food को मोबिलाइजेशन करावर काम होची जिबरलिन ओके इंपोर्टेंट क्वेश्चन 32 रो ए कमेंट सेक्शन भी मु देखुची आ करेक्ट आंसर आछी ठीक अछि 33 को जिबा 33 कहला इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो साक अच्छा हैप्लॉइड माने एन बोली हम ता कहि परिबा अथा क्रोमोसोम सेट थिबो डिप्लॉइड 2n ट्रिप्लॉइड 3n तो हैप्लॉइड की हबो हमरो एम्ब्रियो साक रे जेते सब सेल अछंती सिनर्जी एंटीपोडल्स ठीक अछि ए समस्त होचंती हैप्लॉइड डिप्लॉइड हबो हमरो जाइगोट डिप्लॉइड की हबो जाइगोट हमरो जाइगोट ही गोटे ट्रिप्लॉइड की हबो एंडोस्पर्म
एंडोस्पर्म। तो हम देखिए जाइगोट एंडोस्पर्म को ऑप्शन रे अछि जाइगोट एंडोस्पर्म अछि एठी देखंतु जाइगोट होची 2n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये होची 3n आ सिनर्जिड हबो n सिनर्जिड एम्ब्रियो साक रो गोटे सेल समस्त हैप्लोइड तो आंसर हबो 33 रो डी डी इज द करेक्ट आंसर एही वे रे आपण को सॉल्व कर 33 रो डी यस कमेंट सेक्शन में ठीक आंसर आसला 33 रो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 34 को जिबा ए टिपिकल एंजियोस्पर्म embryo sac at maturity is embryo sac रो केतरा सेल और केतरा न्यूक्लियस पचार तो 30 पॉइंट बहुत इजी क्वेश्चन embryo sac रो 7टा सेल थाए और 8टा न्यूक्लियस थाए ऑलरेडी मोर प्रीवियस लेक्चर वीडियो जगह मैं आ विषय ऑलरेडी डिस्कशन कर सारछि काइंडली जाई देखि दियंतु तो 7 सेल बट लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। In some plants, thalamus contributes to the fruit formation. Such fruits are termed as. अच्छा प्रकृत रे फ्रूट कोटू तैयारी होता है ओभारी रे ओभारी प्लांट रो ओभारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी कौन हुए फ्रूट हुए ओव्यूल सीड हुए ठीक अच्छे किंतु किछि प्लांट मानकर थैलामस ठीक अच्छे से जो फ्लावर गोटे स्ट्रक्चर जो रिसेप्टिकल स्ट्रक्चर अच्छे थैलामस से थैलामस फ्रूट हो जाए से फ्रूट को कौन कहुआ एग्रीगेट फ्रूट्स ट्रू फ्रूट्स पार्थेनोकार्पिक फ्रूट फाल्स फ्रूट तो आंसर हम फाल्स फ्रूट जो थैलामस फ्रूट रे कन्वर्ट हो जाए फाल्स फ्रूट कहुए एप्पल स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल ये सब एग्जांपल होची फाल्स फ्रूट रो मन रखंतु। नेक्स्ट चलंतु जिबा 36 नंबर 36 नंबर को जिबा फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स। अच्छा पार्थेनोकार्पिक ठीक अच्छे कमेंट सेक्शन रे कहउछन्ती पार्थेनोकार्पी विषय कहि दियंतु पार्थेनोकार्पी माने कोन देखंतु ठीक अच्छे या पर क्वेश्चन भी आसीबो ट्रू फ्रूट ओभारी रु बाहरले ताकू ट्रू फ्रूट को आजिबो एठी फ्रूट तयारी हबो फ्रूट तयारी हबो डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ताहले ए फ्रूट कौन हम सीडलेस हम इसको कौन हम सीडलेस ए टाइप रो फ्रूट फर्टिलाइजेशन बिना जदि फीमेल गैमेट रु फ्रूट तैयारी हो गला ताहले आमे कौन कहबा ताको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहबा सीडलेस फ्रूट बट थैलामस रु जदि फ्रूट तैयारी होची ता से हबो फॉल्स फ्रूट ठीक अछि ओके चलंतु आशा करछि आपन डाउट क्लियर हो जाइतबो ओम प्रकाश विदाउट फर्टिलाइजेशन ठीक अछि ओके नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन को जिबा फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू फंक्शनल मेगास्पोर कोथरे डेवलप हुए ओव्यूल एंडोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो तो फंक्शनल मेगास्पोर कौन तैयारी हुए एम्ब्रियो सैक तैयारी हुए मन रखिया एम्ब्रियो सैक को कहा जाए फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ प्लांट फीमेल गैमेटोफाइट ठीक अच्छे जी की 7 सेल आउ 8 न्यूक्लियस तेणु आंसर हम एम्ब्रियो सैक। नंबर 37 को जिबा पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर इयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन मेंटेन्ड एट टेम्परेचर पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन रे स्टोर कर रखा होची तार टेम्परेचर केत रहबो -120 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस -70 डिग्री सेल्सियस -196 डिग्री सेल्सियस
आंसर इज -196 डिग्री सेल्सियस ठीक अच्छे लिक्विड नाइट्रोजन री बहुत कम टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस रे पोलन ग्रेन मान को स्टोर कर रखा जाए ओके 37 डी करेक्ट आंसर 37 डी चलतु आम नेक्स्ट जा 38 को जा यस नंबर 38 38 आउ 39 देखा टोटाल 40 टा क्वेश्चन आज डिस्कशन अच्छे 38 कहतु द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू ओव्यूल कास्ट इक्विवेलेंट मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोरांजियम मेगास्पोरोफिल ओव्यूल होची मेगास्पोरांजियम वेरी इंपोर्टेंट मन रखे एम्ब्रियो साक होची फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो साक होची फीमेल गैमेटोफाइट ओव्यूल होची मेगास्पोरांजियम ठीक अछि नेक्स्ट ओव्यूल भीतर रहइबो एम्ब्रियो साक ओके सीड नंबर 39 को जुआ सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ प्रीवियस लेक्चर वीडियो रे भी डिस्कशन करथली ठीक अछि 39 सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन जदि कहता फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन कहता ताले पार्थेनोकार्पी हेतंता एटी कहला सीड फॉर्मेशन यस कमेंट सेक्शन मु देखुची आंसर डी कहले आंसर डी दैट इज योर एपोमिक्सिस इज द करेक्ट आंसर चलंतु ए लाइव सेशन रो लास्ट क्वेश्चन को जिबा नंबर 40 नंबर 40 द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स हमर जो कोकोनट वाटर अछि से कोन रिप्रेजेंट होछ एंडोकार्प फ्लेसी मेजोकार्प फ्री न्यूक्लियर प्रोएम्ब्रियो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नंबर 40 आंसर कहतु कौन हम कोकोनट वाटर कौन रिप्रेजेंट करुच्ची एंडोकार्प फ्लेसी मेजोकार्प फ्री न्यूक्लियर प्रोएम्ब्रियो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोकोनट वाटर होची गोटे एंडोस्पर्म किंतु फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से एंडोस्पर्म रे बहुत सारा न्यूक्लियस गुड़ाक फ्लोट भासुथिबो 40 रो आंसर हम डी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आ जो कोकोनट रो जो व्हाइट पार्टडा अछि व्हाइट पार्टडा ताहा होची सेलुलर एंडोस्पर्म बहुत इंपोर्टेंट एतिकी फैक्ट मन रखे वाटर होची फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म व्हाइट कर्नल होची सेलुलर एंडोस्पर्म ठीक अछि ए जो इंपोर्टेंट फैक्ट को आपण नोट डाउन कर दंतु बहुत इंपोर्टेंट या परीक्षा आसी पारे ठीक अछि कोकोनट वाटर होची फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोकोनट रो व्हाइट कर्नल होची सेलुलर एंडोस्पर्म थैंक यू तो आज लाइव सेशन रे हमें टोटल 40 टा क्वेश्चन डिस्कशन करले आउ हमर बॉटनी रो टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एठी हमर पूरा कंप्लीट हे गला बॉटनी और जूलॉजी रो आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पई सीईआई चैनल रो जाई कि आपण लाइव सेशन को जाई कि मोर बॉटनी और जूलॉजी रो वीडियो जाको देखंतु बहुत उपयोगी वीडियो बॉटनी रो तीनटा पार्ट अछि फ्राइडे मु नेक्स्ट पार्ट धरि आछी ठीक अछि ओके तो मु जगन्नाथ को प्रणाम जनाऊँगी जे आपणकर एलटीआर मेन बहुत भल हो आशा आप परिश्रम करूँ भलसे पढ़ु आउ नेक्स्ट लाइव सेशन रे आउथरे देखा हबो धन्यवाद एति कहि लाइव सेशन को एठी मु रखुची धन्यवाद।